जॉब तलाश कर रहे हैं जी। तो अपनी इस डिजायर को लोगों से शेयर करें. Don't be afraid, don't Yeah, be yeah. scared, don't be shy. Okay, and your resume goes through scanner. Hmm. If the words that you have in your resume matches with your job Yes, description, yes, yes, that's yes. how you're selected. Yeah, it's scrutinized. That अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में, if you are settled, जी. you can live your life peacefully. Don't bother to come here. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिया, आपके अपने चैनल लाइफ विद बिया पे। और आज है मेरे साथ एक बहुत 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 स्पेशल इंसान जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कज़न ज़ुबैर बिन मुज्तबा। आपको इनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे आज आपको बेसिकली इनको इंट्रोड्यूस करूं अपने चैनल पे और आप लोग भी कुछ इनकी बातों से फ़ायदा उठा सकें। और अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुबैर भाई, मैं चाहती हूँ कि आज आप कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर करें जिनसे लोगों का फ़ायदा हो। जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो आजकल चल रहा है वो हम सब जानते हैं, वो इन्फ्लेशन का है, महंगाई, जॉब से रिलेटेड चीज़ें, इंटरेस्ट रेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे पता है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं। तो आप कुछ ऐसी गाइडेंस दें जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर कोई यहाँ आना चाह रहा है और वो हमारी वीडियो देखे तो उसे कोई अच्छी बात समझ में आ सके, कुछ पता चल सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि आपकी एजुकेशन मैं तो जानती हूँ माशाल्लाह से, लेकिन लोग भी जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, और आप इससे शुरू करें। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा कि I'm gonna call you तुम्हें। जी। So, जी। बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मौका दिया कहने का। So let me start my educational background. पाकिस्तान मैंने 1990 में छोड़ा था। So you जी। can see it's over 30 years in North America. जी। So मैं अमेरिका में भी 10 साल रहा, फिर कनाडा, फिर सऊदी अरब, फिर वापस अमेरिका। So पाकिस्तान से मैंने जो है BSc किया था, डिप्लोमा किया था। Unfortunately, which is equivalent here in you know when you compare the steady or education in North America, zero. तो मुझे हर चीज़ स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी। जी। तो मैंने बैचलर किया है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स से। जी। फिर आई हैव डबल MBA फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से। जी माशाल्लाह। मार्केटिंग में और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में। रिसेंटली लास्ट ईयर आई एक्चुअली गॉट माय PhD in business business administration. जी माशाल्लाह। Basically, it's not PhD, it's DBA, which is Doctor of Business Administration. जी। And the difference is for your viewers, PhD basically is just focused on two things: research and the teaching. But DBA basically is another thing that you can choose, which is the working. So in DBA में जो है आपको एक इंडस्ट्री की एक एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, उसको रिजॉल्व करना पड़ता है बेसिकली। जी। While in PhD you have a thesis that you have to write based on the anything. जी। So that's the main difference. और ये important इसलिए भी तो let me just give you my background with my career because that's important कि जो मैं बताऊँ आपको तो वो आप उसको authentic समझेंगे। मैं पूरे दौर से गुजर चुका हूँ। जी। So I worked 10 years with McDonald Corporation in America. जी। And I'm also graduated from Hamburger University, that McDonald have that education center. It used to be only one in Chicago, Oak Brook. Oh, I see. I didn't know that. Yeah. They have now two different, more universities, one in Hong Kong and one in Singapore. Acha. So you have to graduate from there in order to actually run a restaurant, basically. Mashallah. Then I worked for UPS, and then I worked for CIBC in Canada. Then I actually was also involved in a lot of teaching. I taught a lot of people. I think I have over 1,000 students in here and also in India. That was overland during COVID time. Currently I'm working, and I also have a project that I work in Saudi Arabia with Saudi Royal Air Force as a business analyst, and currently I'm working in USA as a senior business analyst. Again, I'm going to emphasize that why I'm describing my background as far as career. So जो मैं आपको बताऊं career के बारे में जी। तो वो authentic हो, जो exactly, मैं इस पूरे process से गुजर चुके हैं। Exactly. Okay, so let's come to the meat of this conversation, that job. जी। सबसे important चीज that I want to discuss, I want to tell your viewers here that अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में if you are settled, जी। you can live your life peacefully.
don't bother to come here. Honestly speaking, it's not. It sounds easy from there. जी. Like वो उर्दू में कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने. दूर के ढोल सुहाने, एग्जैक्टली. That's what it is there. जी. तो यहाँ पे आन के एक साइकिल है जिसमें से सबको गुजरना पड़ता है और एटलीस्ट 2 years उसमें साइकिल से गुजरने में एग्जैक्टली. कि आपको और जॉब्स मिलती हैं, सर्वाइवल जॉब्स मिलती हैं, मौसम यहाँ का है. तो आई एम नॉट स्केयरिंग एनीवन, जी. बट इट्स आई फील ऑब्लिगेटेड टू गिव यू अ रियल पिक्चर. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोग आ रहे होते हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, मतलब वो अपनी रिसर्च कर आ रहे होते हैं काफी. तो ऐसे में ये हमारा व्लॉग अगर कोई देखेगा तो उसे बहुत फायदा हो सकता है इससे. Right. So let me just give you a little bit more detail. Most of the people who come from Middle East. Okay, so most importantly for those folks who come from Middle East. जी. Middle East में वो काम करते हैं, माशाल्लाह, जी. jobs करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब वो यहाँ move होते हैं, because majority of people who migrate they are coming from Middle East. जी. Saudi Arab, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi are those places. The problem they face here, that the first thing that Canadian employers, you know, they actually excuse not to give you a job, Canadian experience. जी. That's the most important thing. Even you work 10 years, 12 years in back home or in Middle East, even you are not considered an experience. जी. When जब वो कहते हैं कि Canadian experience, they don't mean work experience. Yes. The culture. कल्चर, यस. The culture is totally different जी. than back home. Either जी. it's Pakistan, India, Bangladesh, Middle East. Culture is totally different. डिफरेंट, It's सीरियसली. very important that you have to adjust yourself in culture. यस, यस. And it takes time. It does not happen overnight. इट डज टेक टाइम. जी. Okay, so you have to work at least 1 year in that environment. That's जी. why it's important जी. that you work in fast food restaurant in the beginning. Get any odd job so you can understand the culture. Expectation क्या है यहाँ के लोगों की. That's what is important. या फिर दूसरा काम वो ये करते हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंस, क्योंकि अकाउंट नहीं होता है, जॉब्स नहीं मिलती, अपना बिजनेस खोल लेते हैं. जी. अनफॉर्चुनेटली जब बिजनेस खोलते हैं उनके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं. वो भी लोग उनको मशवरा देते हैं जी. obviously. जी. या तो ग्रोसरी स्टोर जी. या फिर रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट, या. एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको इस एरिया में तजर्बा नहीं होता खोल तो है, लेते हैं, हाँ. उसका चलाना बड़ा मुश्किल और वो फ्लॉप हो जाता है उनका. एग्जैक्टली द सेम रीजन यू हैव नो एक्सपीरियंस. सही बात है. ओके, सो दैट्स टू थिंग आई थिंक दैट एवरीवन शुड नो. जी. You know कि इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है. Now let's come to the job. How you find a job basically. So let me share with you. It might surprise some of your viewers here that only 1% of job you get from other resources. 99% jobs you get through network. Okay, so that's very important. That only 1% job that you get they are from LinkedIn. जी. Indeed, 99% job in North America you get through network. जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो अपनी इस डिजायर को लोगों से शेयर करें. डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी शाय, एंड डोंट हेसिटेट टू आस्क. एग्जैक्टली, जस्ट टेल देम आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, दैट्स माय क्वालिफिकेशन, एंड इफ यू नो समवन हु इज हायरिंग, लेट मी नो. यस. 99% jobs in North America is through networks. I can suggest you can design actually a business card size resume, where on the one side you can put your name, your phone number, your address, and on the other side just put your top qualities that you have, your qualifications that you are good on, and always keep in your wallet. Yeah. So whenever you see somewhere in elevator, even your doctor, your dentist, your barber, and it that business card, your resume has to be with you all the time. Exactly, all the time. So if they are in a party or in somewhere, and they said most of the people, because I'm also involved in a lot of teaching, and I also write resume, and I also help other folks to search the job, career administration, basically you can say. Is people write only one resume and they use the same for everything. That does not work. I mean, I myself, when I was looking for a job, I have 100 resumes. So you can have a base skeleton resume, okay? And your resume should be based on the job requirement, job description. Because currently you will be surprised कि जब एक job के लिए मैंने भी recently आज से 2-3 साल पहले एक job थी, उसमें मैंने advertise किया था, 3 दिन में I got 400 resumes for one job. Really? So, okay. So, like as an HR manager, I cannot review all 400 resumes. Obviously. Okay, so what happens? They use a scanner. Okay, and your resume goes through a scanner. If the words that you have in your resume matches with your job description, that's how you're selected. Yeah, it's scrutinized basically. Exactly. So that's really important that whenever you're applying for a job, your job description should be there. Okay? So you have to have a screen with a split screen where on one side you have your job description, another side you have resume, and pick exact words to put in your resume. So when your resume is going through the scanner, they will pick your resume.
And there's also a misconception that our a lot of people have in the same student that they think that the resume is for the job. That's completely wrong. Yeah. The resume is only for your interview. That's जी it. जी So once you got your interview, your resume work is done, and then you have to prepare for the interview. right. Okay, so that's really important. To So when you understand. say words like certain words that match to the criteria, what do you mean by those words? Like ऐसे कौन से words हैं जो use करने चाहिए resume Right. में जो आपको मतलब अच्छा वो दें? When you see a job description, there are different sections. जी One will be required. जी That would be all the words. Most of the words should be in your resume. Another section you will say good to have. You can add those words also in there. Okay, so these words are help. two section there, yeah, in the job description that Ji. easily you can transfer in your resume, like Yes. soft skill. जी Okay, team building, working as a team, time management, things like that. These Yeah, are very yeah, common, but yeah. some jobs require specific soft skills. So you pick from your job description and insert your resume. You Yeah. have better chances to get interview. Again, keep in mind, your resume is only for the interview, not for the job. okay. Okay, that's very important because Yes. most of the people have the same concept Yeah. that the resume is for the job. That's Yeah. 100% incorrect. Okay, got it. You This need is to a point to be understand. noted. Yes. Yeah, that's important to Yes, understand. yes. That resume is for your interview, and the second step that your interview Is that the you need to interview? prepare for. Yes, yes. A lot of tools available online that you can review for the interview, जी and then you will be successful for that. जी जी So I think these some of the things that people have misconception about that. I thought it's a good opportunity to describe them and make sure they understand exactly. नहीं, and then for this I think we will need a detailed session again. I mean, like, hopefully once I get some good comments on this, I hope I will. तो फिर we will have to do a separate session for this because आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एक बहुत तजुर्बेकार इंसान से. तो आप प्लीज जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपको आपके लिए यूजफुल रहा. तो मैं इंशाल्लाह अपने भाई से के साथ एक और सेशन करूंगी. और ये बहुत मसरूफ़ होते हैं, इन्होंने अपनी मसरूफ़ टाइम में से मेरे लिए वक्त निकाला. बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए. और जो है इंशाल्लाह होपफुली आई विल गेट अ वेरी गुड रिस्पांस फॉर दिस बिकॉज पीपल विल गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन हियर. जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम. Yeah, no problem. Thank you very much again to give me that opportunity. I hope it makes sense to some of your. Inshallah, I think it will. Inshallah. Okay. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.